vehicle, the auto rickshaw. Sri Navalmalji Firodia was an embodiment of the true essence of Jain values and ethics through which he lived his life. We fondly remember him on this momentous occasion as we gather here for the inauguration of Abhay Prabhavana. In the Jain tradition, Prabhavana means a precious and selfless gift to the society for the benefit of all. This museum and knowledge center, Abhay Prabhavana, has been built under the vision and leadership of Sri Abhay Firodia, son of Sri Navalmalji Firodia. Today, we are honored to have with us extraordinary personalities who have demonstrated through their life and living how moral and ethical values are actually practical in today's chaotic and complex world. We commence our ceremony with the rendition of the Navkar Mantra, which is the prime proclamation in the Jain tradition of seeking inspiration for the knowledge path from the Tirthankars, the ford makers. The Navkar Mantra by Sadhvi Shri Shilapi Ji Maharaj Sahib. With the inspiration and blessings of Pujyataima, let's begin this divine evening with the gratitude to the Jineshwar Bhagwan. I request all of you to fold your hands, close your eyes, and let's invoke the divinity and pray together for the amazing success of this extraordinary endeavor. Om Namo Arhantaram. Om Namo Siddharam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahuram. Eso Panchanamokaro Savapavapanasano Mangalancha Savesim Paramam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Tasmai Shri Gurave Namah. Om. Thank you.
we welcome Honorable Shri Nitin Gadkari ji. May I request the members of the Firodia family to please felicitate our esteemed guests. Thank you. The Firodia family has not only been successful entrepreneurs over generations, but have also contributed selflessly towards social, educational, and healthcare sectors in a significant manner. May I request Shri Abhay Prabhavana, Chairman of Amar Prerna Trust, to speak about his vision of the museum and its significance in contemporary Indian culture and heritage. Over to you, sir. Revered spiritual leaders on the dais, Acharya Shri Chandanaji Maharaj, Gurudev Shri Rakesh Ji, Siling Tongkor Rinpoche, distinguished dignitaries, Shri Gadkari, Justice Bhandari, Maharaja Sindhya, Maharaj Kumar Udaipur, Menakaji Gandhi, Anna Hazare, D.R. Mehta, distinguished people in the audience, ladies and gentlemen. On this occasion, I want to speak of three things as briefly as is possible. The first thing is, on an occasion like this, I have some personal thoughts which I would like to share. I'll speak briefly about that. Then I want to cover how the project was progressed, and finally about what this project is meant for, what is the purpose. So on this day, I complete 80 years of my life. I can clearly see that I am one of the most fortunate people possible, having been born the son of the great man Sri Navalmal Firodia. My father had the vision for the society, the country, and was both a great entrepreneur, a great patriot, and a very complete person infused with Jain values. I have been enabled by destiny to carry out this task of creating this museum and knowledge center
promoting the values of Jainism, indeed the values of the entire Indic culture. My ancestors created the trusts with resources and objectives for nurturing and promoting the values we hold dear. The example of my father, my grandfather, to observe the civilizational guidance for different emphasis in different phases of life has been an inspiration. The 4 ashrams of life, we all know, Brahmacharyashram, Grahasthashram, Vanaprasthashram, and so on, appear to me to be very realistic and logical indeed. I had a good innings in my youth and a creative business career in midlife. It was natural for me, therefore, to step away from business in my Vanaprasthashram phase. My having gradually but surely stepped away, as the age-old tradition advises, was made possible by my sons having confidently and very ably taken over my business responsibility. My daughters, meanwhile, have pitched in this project to help me achieve the daunting objective to put together this repository of knowledge of philosophy, culture, and history. I had importantly the support of my immediate family, also encouragement of spiritual leaders like Acharya Shri Chandanaji Maharaj, willing assistance of friends to build this institution. I discovered that as we set out on this constructive path, in addition to old friends, we had the good fortune to make friends with remarkable new people who have helped in this project immensely. I will do injustice to many, and thus I have to refrain from naming anyone. While setting out to create this museum and knowledge center, one first had to define what the museum is to convey. To begin with, we identified basic philosophical and metaphysical concepts that need to be explained, on which the edifice of the values of the Jain tradition and consequently also the values of the entire Indic tradition stand. This was the aspect of philosophy. Secondly, it was important to explain the antiquity of the Shraman tradition, of which Jain and Buddhist traditions have emerged. The tradition evolved as each successive preceptor contributed solutions and guidances according to the situation of the society in his time, to align the thinking of the people both in societal requirements, compassionate social environment. So the evolution, including history, literature, art, architecture, these galleries were conceived. Also importantly, through millennia, the existence of empires, their main characters, their geographies were decided to be captured. Rituals, architectural, heritage, social practices were included in this thinking. The totality of this cultural evolution is part 2 of the museum. Then under the advice of friends, it was decided to add the relevance of Jain values in today's world. How the social attitudes, personal practices propounded in this tradition are valid in today's hurly-burly world. While conceptualizing this, the emphasis was to examine and state whether man will be personally happy if he were to accept the Jain way of life, and to what extent the society and the environment would benefit from the same. This third section is called the path to happiness. Finally, while interacting with a number of scholars, it became crystal clear that the values as explained in Jainism
in a stark, clinical, logical, direct manner. That's the speciality of Jainism, that they explain the values as values. There is no mumbo-jumbo attached. These are also expressed in the Vedic tradition, mainly with reference to highly revered individuals. But the values are identical. The method of presentation, the statements are different. If you read chapter 2 of the Gita, I dare to say it is entirely 100% identical to Jain philosophy. There is nothing more in Jain philosophy that the Gita does not have, and vice versa. There is nothing in Gita that the Jain philosophy does not propound. The total concept of the content of the museum thus was formed with this fourth part of the amalgamation of Indian values. We then moved to acquiring land, conceptualizing and creating appropriate buildings to justice to the grand idea. I today remember, or am reminded, of one Sanskrit statement from the Rig Veda. Ano bhadrah kratavo yantu vishvasaha. Let noble thoughts come to me from all directions. That has been a foundational statement in the Indian cultural ethos. With this in mind, the role of architects, museum designers, artists, technicians, technology, their involvement, our interaction with them, getting their advice, this became clear. It was decided that the experience of visiting the museum must be comprehensive for all ages, in all variety of people, and it must be a happy, enjoyable, and fulfilling experience. We tried to inject into the DNA of the museum this idea and also added serene landscape to our concept. So many people helped in acquiring the land, in designing the building, in creating the details of the gallery spaces and so on. Eventually, while we were working on the content and the exhibition design on land, building, the technology became gradually clear. Many sensitive, compassionate, committed, talented people came on board. As they say, hum chalte rahe, karwa banta raha. I am pained not to be able to name specific people, many of whom deserve my utmost respect, regard, and accolade. But I am afraid that those who have silently contributed, but not mentioned by me in this speech, would mind it more than those who I could mention would find it fulfilling. In the Jain tradition, I ask for Shama for not being specific. So many have contributed so much to cover the original concept of telling the philosophy, embellishing the evolution in art, heritage, in explaining the value system, their validity in today's world, and above all, in bringing to conclusion the impact of this value system on the Indian civilization. This project took 10 years to complete, from germination of the idea to the inauguration of the project. Hundreds of people worked on it simultaneously in different fields. If I consider an average of 200 people per day, their assistants, scholars, their supporters, engineers, their teams, construction workers, consultants, administrators, it is possible to say that the average of 200 people per day were surely engaged, if not more than 200, for 10 years. If you say that there are 3,000 working days in 10 years, then 3,000 into 200 into 8 hours per day would amount to nearly 50 lakh working hours, 5 million working hours. The knowledge, the talent, the technology, the devotion, dedication, commitment of these people, their perseverance and inspiration cannot be measured.
Suffice it to say that it took 10 years and 5 million hours to put this idea together. I now come to the purpose. What is the purpose of this museum? What is it that we are trying to say in the museum? What is the purpose of the museum? I looked at 3 important components or important formulas. The first formula is the 3 E's formula. I strongly believe that 3 E's, which are implicit in the Jain tradition and they are inherent in the Indian civilizational character, are the first E is education, the second E is enterprise, creation, development of wealth, flourishing society, and the third E is ethics. Without these 3 E's, mere education is useless. Enterprise without ethics should not be done. Ethics are to be understood, internalized, and practiced as one understands them. Ethics brings objectivity, compassion. Education is important, enterprise is more important, and ethics is most important. The 3 E's connect with the 3 A's, ahimsa, anekantvad, and aparigraha from the Jain tradition for a fulfilling life and an effort towards spiritual elevation of the individual. True happiness is not in amassing wealth. It is rather in non-possessiveness and the ability to detach oneself from wealth. I don't want to sound like a guru on this occasion. I am not one. But I strongly believe that it is good to create and possess wealth if you use it for good purposes. But it is wrong to be attached only to wealth and to amassing it. You must also look at how it can be put to good use. My second point is religion, as we know, has 3 components. Rituals, puja, putting flowers, lighting lamps. Stories of immortality, deification of great personalities. That Bhagavan Mahavir said this, and Sri Krishna said this, and Bhagavan Ram was like this. These are stories of immortality. They are good, very useful for binding people together, but by themselves they are not religion, they are Purana. And the third aspect is values. Religion is a structured effort for enabling personal happiness. It is not about imposing restrictions, performing rituals, or about blind faith. Religion is making possible, showing a path of objectivity for spiritual elevation. I recall His Holiness Dalai Lama, whom I had the good fortune to meet, arranged by my friend Samir Somaya, who is very much here in the audience. Somebody asked him, Your Holiness, what is religion? His answer is priceless. He said, religion is the process of enhancing faith in values, not in God, not in rituals, in values. Every Indian religion says the same thing, and particularly the Jain religion is very direct about it. What is this value system of the Jains? There's a lot of misunderstanding that Jainism is the religion of Mahavir. Mahavir was the 24th Tirthankar. An amazing person. His contribution to our country's ethos is unparalleled, is unmatched. But he is not the founder of Jainism. Jainism was founded at least 3,000 years before Mahavir by Rishabdev. Today, sadly, most Dharma gurus, most scholars do not talk much about the values that Rishabdev propounded. And I felt during the course of this that we have to correct this perception. Because what Rishabdev propounded is what our country is doing, not what Mahavir propounded.
And what did Rishabdev say? He said, Asi, which is astra, weapons, defense, be strong, don't be weak, don't be overpowered. Masi, ink, communication, be connected. Kasi, krishi, which meant production, produce surplus. Vanijya, the first perceptor in human history to have said trade. Trade creates prosperity. This is Jainism. Then he spoke of Shilpa. Shilpa is skills. It is not just making murtis. The skills that we talk of today, like computer operating skills and electronic equipment maintenance skills, are important. But for that era also, there were skills that were important, which he propounded. And the last but not the least is Vidya. Mathematics, there is a huge tradition of Jain mathematics, astronomy, and so on. Bhagavan Parshvanath, the 23rd Tirthankar, spoke of ahimsa and aparigraha. Aparigraha means non-possessiveness. Don't be overly attached, not only to anything, but even any person or any idea. Be objective. Bhagavan Mahavir propounded anekantvad. Do not insult the thinking of somebody else. It is valid from his point of view. Respect it. Be objective and sensible about it. And Bhagavan Mahavir also gave the mantra of Kshama. That means do not carry a rancor in your heart. Forgive and ask for forgiveness. You will unburden yourself, you will unburden the other person, you will be able to move forward. Bhagavan Mahavir's most important statement from my point of view is Panna Samikhe Dhammam. Panna is Pradnya, inner consciousness, your real knowledgeability. Samikhe is Samiksha, which means to examine. And Dhammam is Dharma, the truth. Examine it for yourself. Accept it only if you find it logical, compassionate, sensible, doable. Otherwise, it is not Dharma. There can be nothing in Dharma which is illogical, nothing which is not sensible. Your own awareness for its validity is very important. Jain value system is the totality of all the 10 values mentioned above. We have sadly been entrapped in considerations of Sukshma Himsa, and similar to the Vedic tradition, a lot of rituals and bhakti have impacted Jainism, which at the time of Mahavir or Parshvanath was not so. The history of Jain, also the Buddhist tradition, is full of bravery, chivalry. Chandragupta Maurya, the great emperor, was a Jain 2,300 years ago. Rani Abakka, 400 years ago, chased away the Dutch from the Mangalore coast. Abhinandan Vartaman, 4 years ago, shot down a Pakistani plane and was captured. He's a Jain. Practicing Jains living in South India, which few people understand as being Jain territory. Statecraft, economy, Chanakya was a Jain. I know I interact with the members of the Bhandarkar Institute, of which I am the chairman, and there is a point of view that no, Chanakya was Vishnugupta, he was a Brahman Vedic person, but there is enough evidence to support my argument that he was a Jain. Bhama Shah, the man who supported Maharana Pratap at great risk. Social service and compassion I need not to talk about, because the most socially conscious charitable community in India are the Jains. This is the hallmark of the Jain community. While the commitment to ahimsa is central, it is also essentially logical ahimsa.
If somebody slaps you on the left cheek, don't tell him, slap me on the right cheek if you enjoy it. No. Ahimsa is only for being compassionate. If somebody attacks you, attack him back. That is what the Jain tradition says. Virodhi himsa is not himsa. Sahajik himsa is not himsa. You are walking and an ant comes under your foot. You don't know there is an ant there. How are you responsible? Vyavasayik himsa is not himsa. If you are a soldier and you are fighting a battle and you have to shoot and kill the enemy, it's in the line of duty. It's not himsa. So ahimsa should not be taken to the extreme end where you say, well, doesn't matter, I die, but I will not budge from the path of ahimsa. Ahimsa is conditional. One needs to look at Jainism through not blind acceptance of texts and traditions. There has been always a misunderstanding about Jain tradition being ahimsa-centric. Modern generation needs to question, examine, and then accept any percept. I am not saying this. Bhagavan Mahavir has said it. Panna samikkhaya dhammam. Don't accept anything, no matter how big the person is who tells you that. If you understand, examine, accept, then you can be sure that you are doing the right thing. Being objective and rational is not being insensitive or less humane. The mission of the museum is to spread this approach, to see and understand for yourself the values inherent in Jainism. Today, at the inaugural function of this project, I can very honestly say I am totally gratified and fulfilled at having created this institution, which I do hope will enable the common man and certainly the youth to be introduced to the stark realities of our tradition, the great values inherent in it in an objective, realistic way, and accept those values. If we are India, it is because we have Indian civilization. Indian civilization is one set of values, whether you are a Vedic Hindu, a Brahman, a Kshatriya, a Jain, a Buddhist, they have the same values. All other things are social engineering by different people. So I today am totally gratified, fulfilled, and with my respects to all of you who have done us the honor to come here at this inauguration, and bowing to the spiritual leaders, I say thank you very much. Padma Shri Acharya Shri Chandanaji Maharaj Sahib is the founder and spiritual head of Virayatan, a leading international charitable organization established over 50 years ago in Bihar. In her extraordinary life of 86 years, Acharya Shri Chandanaji Maharaj Sahib has devoted 50 years to seva in a difficult place like Bihar, and has set a new example of compassion in action for Sadhvis in the Jain tradition. She is the first Sadhvi ever in the Jain tradition to be created Acharya. She was recently conferred the Padma Shri by the Government of India. Acharya Shri Chandanaji Maharaj Sahib's mission has been to transform lives through selfless service, seva, education, shiksha, and spirituality, sadhana. I request Maharaj Sahib to please give her blessings. मेरे आत्म प्रिय
अभय प्रभावना इस महान तीर्थ का आज हम ओपनिंग कर रहे हैं। इतनी प्रसन्नता है मेरे मन की जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ, और वही प्रसन्नता मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, हजारों वर्ष पूर्व की ये संस्कृति, ये धर्म, ये दर्शन जो भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न पहाड़ों में, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में, विभिन्न वीरान जगह पर बने हुए हैं, जैसे खारवेल की गुफाएं, उसी प्रकार से उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, इसी प्रकार से कई मंदिर, राणकपुर के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, अचलगढ़ के मंदिर, कितने ही मंदिर, उन सब को हम देख नहीं सकते हैं। और उन लोगों ने भी एक जंगल में, पहाड़ों में, एकदम एकांत में ले जा कर के बनाए हैं। क्या उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इस जगह पे कौन देखने के लिए आएगा? यहाँ पर भी आने के बाद में हम लोगों को भी मन करता है कि अगर ये बॉम्बे में होता, पूना में होता, कलकत्ता में होता, दिल्ली में होता, तो लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग देखने के लिए आते। लेकिन मैं सामने से ही प्रश्न पूछती हूँ कि क्या कारण है कि खारवेल ने, क्या कारण की अजंता की गुफाएं बनाई हैं? क्यों ऐसी जगह पे जाकर के बनाए जिसको आज भी हजारों वर्षों के बाद में भी उसे देखने के लिए श्रद्धा के साथ जाते हैं? मैं आज भारतवर्ष में जैन परंपरा की अनेक संस्थाएं अनेक जगह पे काम करती है, लेकिन वे देखती हैं कि ऐसी जगह पे काम किया जाए जहाँ पे सभी लोग उसका पूरा अच्छी तरह से लाभ उठा सके। लेकिन इन सब में अभय भैया एक विलक्षण व्यक्ति, एक विलक्षण प्रतिभा और विलक्षण समझ के कारण उन्होंने, यह वह जगह है जो हजारों वर्ष पूर्व ये जैन परंपरा का ये स्थान रहा, यह क्षेत्र रहा, यहाँ पे गुफाएं हैं, और जहाँ जैन धर्म का नवकार मंत्र लिखा हुआ है, उस जगह पे अभय भैया ने इस वीरान जगह पे, एकांत की जगह में लोगों को आना आसान नहीं है, ऐसी जगह पे निर्माण किया है और इतिहास को सुरक्षित रखने की कोशिश की है। मैं अंतःकरणपूर्वक फिरोदिया परिवार, क्योंकि अभय भैया के पिताजी नवलमल जी फिरोदिया ने विरायतन को, जो आज ये रूप आप देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा, अगर मैं श्रेय किसी को देना चाहती हूँ तो अभय भैया के पिताजी, जिनको हम सब विरायतन वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उनके प्रयास से हुआ है। और अभय भैया के साथ साथ में उनके इस परंपरा को बचपन में इनके दादा कुंदनमल जी फिरोदिया, जो दादा जो अहमदनगर में थे, फिर पूना में आए, फिर बॉम्बे असेंबली के स्पीकर थे। मैं केवल 8-10 वर्ष की थी, तब वे मुझे बराबर पढ़ाते थे, समझाते थे, और जैन धर्म का किस प्रकार से अनुसरण करना है, उनके बचपन में ही उनके संस्कारों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस फिरोदिया परिवार ने एक ऐसा किसी व्यक्ति का ही नहीं, लेकिन धर्म का, संस्था का, संस्कृति का, इन्होंने इस प्रकार से इतिहास सुरक्षित रखा है। जैन समाज, भारतवर्ष का समाज, और मैं महाराष्ट्रीयन लोक इथे आहेत, माझा जन्म पुण्याचाच आहे, मी मराठी विसरले नाही। आणि गडकरींना खास करून सांगते की महाराष्ट्राची भूमी ही एज्युकेशन, संस्कार और एक विशिष्ट कार्यभूमी आहे। ह्या भूमीवर इतका महान तीर्थ निर्माण झाला आहे। ह्याकरता आपण जितकं पण ह्या कार्याला सहयोग देऊ शकू, जितकं पण लोकांना इथे येण्याकरता आपण प्रेरणा देऊ शकू, ह्याकरता आपल्याला पूर्ण प्रयत्न केला पाहिजे। कारण की हे एक धर्माच्या, एक वस्तूचा नाही, परंतु संपूर्ण भारतीय संस्कृतीचा इतिहास ह्या इथे सुरक्षित आहे। मी फार फार अभय भैयांना अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देते। एक व्यक्ती आपल्या जीवनमध्ये इतकं काम केलेला मी पाहिला नाही। 10 वर्ष झाले आहेत, लगातार रात आणि दिवस
तशा प्रकारची त्यांनी मेहनत केलेली आहे, जसा श्रम केलेला आहे. मी असा प्रकारचा श्रम साधू समाज नाही पण ग्रस्त समाजमध्ये पण असा कुठे पाहिला नहीं जो अभय फिरोदिया जी ने केलेला है, अभय भैया ने किया है. मैं उनको अपना जो भी मेरे भीतर में आज उनका जन्मदिन है, 80वां जन्मदिन है और 80वें जन्मदिन पर उनके भविष्य में सुखद यशस्वी और आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए और उनके द्वारा इसी प्रकार से उनके जो पुत्र हैं प्रसन्न, इसी प्रकार से श्री बाला है, सुनंदा है और तीसरी लड़की का नाम हर्षा. मैं सभी से कहती हूँ कि जिस प्रकार से पिताजी ने एक ऐसा दिव्य इतिहास का निर्माण किया है, उस कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया है और भविष्य में भी इसी प्रकार से देते रहेंगे और इसको सारे देश के लिए, सारी दुनिया के लिए एक आदर्श दर्शनीय स्थान हम बना सकेंगे. इसके लिए अपने प्रयत्न करेंगे. सारे समाज का यह कर्तव्य है कि उसके लिए प्रयत्न करना है. बहुत बहुत धन्यवाद. आज अभय भैया के जन्मदिन पर उन्होंने ये ओपनिंग किया है जो देश को, उनको भेंट देनी चाहिए. इसकी अपेक्षा से अपने जन्मदिन पर समाज को भेंट दे रहे हैं, ये बहुत बड़े गौरव की बात है. मैं उनको अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद दे रही हूँ. We are privileged to have with us Gurudev Shri Rakesh Bhai. Gurudev Shri is an enlightened Jain leading an exemplary life, though not a formally ordained sadhu. He has strengthened and popularized the extraordinary example set by Jain spiritual leader Srimad Rajchandra. Rakesh Bhai founded the Srimad Rajchandra mission in Dharampur. His thousands of followers in India and internationally comprise a remarkably large number of motivated and enthused youth. Gurudev Shri is a spiritual leader of the 21st century, propagating the values of Jainism through his life and work. I invite Gurudev Shri to kindly share his thoughts. ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः. It is an honor to be in the divine presence of Pujya Taima and a pleasure to be among the distinguished dignitaries and guests. Abhay Prabhavana is described as a museum of ideas showcasing the timeless values of Jainism. But let me confess something, I don't entirely agree with this description. For the world, a museum is a place where old artifacts are put on display. But Abhay Prabhavana is a living, thriving, shining modern monument to one of the greatest gifts that humanity has ever received, the Jain way of life. Museums are used to preserve culture, but this museum will be used to propel the culture. Museums are where you learn about a particular subject, but this museum is where you immerse in the subject and experience it within. Museums are historical, but Abhay Prabhavana is historic. Today, the word museum will be redefined. We live in the world where first impressions matter deeply. First impressions
are indeed lasting impressions. My first impression of Abhay Prabhavana, even before I saw the majestic space, was its motto, timeless Jain values. And just those 3 words left such a deep imprint in my heart that I am standing here today feeling honored to witness this historical inauguration. I want to spend a few minutes sharing what touched me the most about these 3 words and why it is a testament to its founder, Sri Abhay Prabhavana. Timeless. In every generation, every century, every millennium, every era, Jainism will prevail. Timeless because Jain Dharma has not come from a person, it has come from principles. It is not dependent on scriptures, it perseveres through the sanctity of its values. It does not belong to a country, it belongs to the people of a certain character, no matter where they are from. This is what makes it timeless. But when I read the word timeless, I experienced another feeling. I felt a boldness in the choice of word, a defiance rooted in faith. Religion as a term has been tainted with associations of orthodox, traditional, and outdated. The word timeless breaks these cobwebs of prejudice and puts dharma in a new light. Sri Abhay Bhai has created an experience that takes us back in time, showing us the glory of the enlightened ones, connects to current times by translating the values to the present day seeker, and is far ahead of time in terms of innovation, creativity, and foresight. Abhay Prabhavana truly exemplifies the timelessness of Jain values, and I am sure that people will want to visit the place time and time again. Jain, the second word of the motto. A unique philosophy where you must go deeper in order to go higher. You must go within in order to go forward. You must love yourself in order to love selflessly. And countless enlightened ones walked the path to reach the pinnacle of liberation. To completely express the richness of their thinking, the fables of their feats, the purity of their state, the legacy of their work is next to impossible. And yet, Abhay Prabhavana is one of those rare places which achieves it with finesse, elegance, and reverence. Like I said, first impression are lasting impressions. And for anyone who wants to get a first impression of Jainism, this is the place to come. And finally, values, timeless Jain values. Srimad Rajchandraji writes in his magnum opus Shri Atma Siddhi Shastra, Moksha kayo nija shuddhata te pame te panth. Moksha is inner purification. Moksha marg, the path of moksha, is paved by values. We can see that the contribution that Sri Abhay Bhai has put in bringing these values to life is nothing short of invaluable. A mother can hire a number of nannies to take care of her baby. But when it comes to nourishing the child with the milk, that can never be delegated. In the same way, despite having a big business empire to run, Sri Abhay Bhai has poured countless hours, his blood, sweat,
and tears to breathe life into every inch of this project. The global Jain community will forever be grateful to you for your labor of love. The legendary boxer Muhammad Ali once said, "Service to others is the rent you pay for your room here on earth." Abhay Bhai has not just earned a place on earth, but in the hearts of those who will benefit from it. His true wealth isn't in what he has, but in what he gives. And by that measure, he may be one of the richest amongst us. When Starbucks, the coffee shop was first launched, it was known as the third place. A place between home and office. A space where people can relax, unwind, learn something new, or just process their day in a calm environment. As Jains, we have visited several temples and tirths. As tourists, we have gone to museums and malls and places of interest. Abhay Prabhavana is the new third place for seekers because it has the essence of the temple and it has the attraction of must-see destination. This is its spot of the hour. Abhay Bhai is known to make world-class engines which power the vehicle and move it from one place to another with ease. In Abhay Prabhavana, he has built a world-class inner engine which can accelerate our journey on the path of the jhanas. And this inner engine launches at a very auspicious time. This year is the 2550th Nirvan Mahotsav of Bhagwan Mahavir and is being celebrated as a momentous year-long festival by the Indian government. Even after 2550 years after Bhagwan Mahavir's Nirvan, we can see that he will take birth within many seekers through this majestic Abhay Prabhavana. In this space, Bhagwan Rishabhdev's true glory comes to life. The stories of the 24 Tirthankaras roam in the corridors. Eye-opening secrets and enlightening knowledge whisper through the walls. The ground you walk on pulls you towards the root of Jain culture. I've personally seen this museum just some months back. And this is my personal opinion. The children's eyes will light up with awe. Youth will fall in love with religion. Adults will find answers to their burning questions. And the seniors will get charged with vitality. Abhay Prabhavana sparks your brain, softens your heart, and strengthens your faith. For a Gnan Margi, it is an encyclopedia. For the Bhakti Margi, it is a temple of devotion. For the Dhyan Margi, it's a center of peace. And for all of us, the Moksha Margi, it is a gas station that recharges us. Out of all days, Sri Abhay Bhai has chosen his 80th birth anniversary for the Lokarpan of Abhay Prabhavana. That too is a testament to his giving nature. While birthdays are meant for receiving gifts, Sri Abhay Bhai on his birthday is giving the world a memorable one. As I conclude, I want to remind everyone that Abhay Prabhavana is not just a building, it's a beacon, it's a lighthouse of Jain values, guiding us towards self-reflection and deeper understanding. This center will be a gateway to spiritual discovery for generations to come.
on behalf of Srimad Rajchandra Mission Dharampur, my deepest congratulations and heartfelt gratitude to Sri Abhay Bhai Firodia, his family, and the entire team. May this Prabhavana take us all to the Param Prabhavana of Moksha. Jai Jain. It is indeed a great honor to have the revered Siling Tongkhor Rinpoche representing His Holiness, the 14th Dalai Lama today. Recognized by the Dalai Lama as the 14th Tongkhor Rinpoche at the age of 2.5 years, he is thus an avatar. He currently resides in Serame Monastic University in Mysore. Focusing on spiritual studies, he is a much sought-after person to speak at international forums on Buddhism, compassion, and humanity. Remarkably, he has done in-depth study and possesses deep knowledge of the Jain tradition as well. He represents His Holiness, the 14th Dalai Lama, whose blessings and message he will read out. I request revered Siling Tongkhor Rinpoche to address the audience. I wish to pay my obeisance to the great spiritual masters here and share my greetings to all the dignitaries and the distinguished guests and Dr. Abhay and the wider members of the Firodia family, and would like to congratulate all of you for the inauguration of this knowledge and museum and knowledge center. And it is a privilege for me and a great honor not just to attend this hallowed gathering, but to represent His Holiness the 14th Dalai Lama and to read his message for all of us. I am pleased to note that the Firodia Institute of Philosophy, Culture and History near Pune in Maharashtra state is planning to inaugurate a museum and knowledge center with the objective of showcasing ancient Indian values. For thousands of years, India has upheld a tradition of ahimsa, non-violence, or doing no harm. This has been supported by karuna, or compassion, and concern for others' well-being. India's age-old practices for developing a calmly abiding mind and insight into reality has given rise to a thorough understanding of the workings of the mind and the emotions. The 20th century was an era of violence and bloodshed that produced pain, fear, and widespread destruction. Now, in the 21st century, if we are not to repeat these mistakes, we need to know not only how to cultivate peace of mind, we need to ensure that dialogue and diplomacy is the way to resolve our disputes. We need to know not only how to cultivate peace of mind, but also to recognize that it is emotions like anger and jealousy that disturb our inner peace. The new Museum and Knowledge Center at the Firodia Institute shows how ancient Indian values were fostered, including by members of the Shramana tradition, those austere monks who exert themselves in spiritual practice, such as the Jain Munis. I am confident the museum will contribute to helping visitors understand the importance of cultivating such values as non-violence, compassion, and contentment towards achieving the peace in the world that we all want to see. With my prayers and good wishes,
Signed, Dalai Lama, 28th of October, 2024. My friends, as His Holiness the Dalai Lama jokingly say a lot of time that he is son of India because his mind is nourished with ancient Indian wisdom and his body is powered by dal bhat. And as you can see, I also had a bit of too much dal bhat myself. And so on a more serious note, Tibet always regard India as a sacred land, Arya Bhumi, not just because we received the Buddha Dharma from India, but because India is this great banyan tree under which the branches of which all those traditions of wisdom which brought inner transformation. Today, as we inaugurate this museum and knowledge center at the Firodia Institute in Pune, I am reminded of India's extraordinary gift to the world. Here, we see the profound philosophical insights of the Vedanta, teaching us about the nature of consciousness itself. We have the systematic analysis of mind from the Buddhist perspective, the absolute commitment to non-violence from our Jain brothers and sisters, the deep devotional traditions of the Bhakti movement, showing us the power of love and dedication, the Sikh tradition teaching us about seva and equality, and many more beautiful teachings reminding us that the divine is within the heart. In our modern times, we have progressed and we have become very intelligent in terms of external things, be it computers, smartphones, spacecraft, or the latest edition, artificial intelligence. But at the same time, sometimes we tend to forget something more crucial to the heart, the inner science of mind, the technology of peace that India has developed over thousands of years. This museum and knowledge center will help us recall, revive, and relive those values. It will be like a clear mirror reflecting these ancient Indian wisdoms in a way that speaks to the modern mind. When people come here, they will not just find historical artifacts, but living wisdom. Not just information, but transformation. So we must remember that in all these traditions, the emphasis is not just on the scholasticism alone, but on practice, sincere practice. So therefore, all our knowledge must turn into wisdom, our philosophies into experience, and our compassion into action. So now let me conclude with an important prayer from our tradition, a prayer for all sentient beings. May all beings be happy. May all beings be free from suffering. May all beings recognize their true nature. May all beings experience peace. And let this cultural center be a place where the ancient rivers of Indian wisdom flow together to nourish the garden of peace in our modern world. Let it be a space where the inner science of India help us create a more compassionate and a more conscious humanity. Om Shanti Om. Tashidilek, Sarva Mangalam. Thank you. His Excellency Shri Jyotiraditya Scindia, Union Minister for Communications. As His Highness the Maharaja of Gwalior, Shri Jyotiraditya Scindia and the Scindia royal family have a deep connection with the Jain tradition as protectors, defenders, and preservers of Jain tradition
its monuments and society in Madhya Bharat, central India. The Maharaja Scindia of Gwalior, with a 300-year legacy, is also the most modern person, having studied in Stanford University, engaged as an investment banker with close exposure to international business systems and practices in Europe and Asia. Now, as minister, the country looks at him as a source to provide modern, mature, and dynamic leadership for years to come. May I request Honorable Shri Jyotiraditya Scindia, guest of honor, to share his thoughts with us. आमचे मंचवरती आचार्य चंदनाजी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री राकेश भाई, सिलिंग तोंगचोर रिनपोचे साहेब, आमचे नितिन गडकरी साहेब, माझे अभय फिरोदिया साहेब, मंचवरती श्रीमती मेनका गांधी जी, महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी, जस्टिस दलवीर भंडारी साहेब, डी.आर. मेहता साहेब, अण्णा हजारे साहेब आणि सगळे आमचे बंधू आणि भगिनी, जय जिनेंद्र. प्राथमिक तौरमध्ये मी फिरोदिया साहेबला त्यांची 80 वर्षची वाढदिवसची शुभेच्छा देतो. आज एक ऐतिहासिक दिवस आहेत आणि सुरुवातमध्ये ऋषभदेव महाराजला, भगवान महावीरला, आमचे सगळं मंचवरती संतला आणि सगळे अनुयायीला मी प्रणाम करतो. सौभाग्यशाली ये समय है, कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के पहले वाला समय है, और जब ऐसी एक शुभ शुरुआत हो रही है, दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के मध्य, मुझे विश्वास है कि इस अभय प्रभावना से एक नई प्रेरणा का संचार केवल जैन समाज के लिए नहीं, लेकिन समूचे भारतवर्ष, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि समूचे विश्व के लिए ये संचार होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है. ऋषभदेव महाराज और भगवान महावीर की हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया था धर्म का, अहिंसा का, और उन्होंने कहा था कि अहिंसा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है. और आज इस दिवस पर मैं पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का भी इसमें स्मरण करना चाहता हूं, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और मुझ जैसे लाखों लाखों अनुयायी उनके मार्गदर्शन पे चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं. हमारा ये जैन धर्म, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मूर्तियों में नहीं बसा हुआ है, केवल ग्रंथों में नहीं बसा हुआ है. हमारा ये जैन धर्म जीवन शैली की एक व्याख्या है, एक परिचय है. और जब मैं कहता हूं कि एक परिचय है, जीवन शैली की एक व्याख्या है,
जो 1000 साल पुरानी नहीं, 2000 साल पुरानी नहीं, लेकिन 3000 साल पुरानी है, जिसने अपना ज्योति का प्रकाश पूरे विश्व में सूर्य की शक्ति की तरह, एक उजाले की तरह पूरे विश्व में इसका संचार किया है। हमारे धर्म की मान्यता, विश्वास, सम्यक दर्शन, यू मस्ट हैव द करेक्ट व्यू ऑफ लाइफ। सम्यक ज्ञान, यू मस्ट हैव द करेक्ट knowledge in life. And samyak charitra, you must have always the correct character in life. ये हमारे धर्म के 3 रत्न हैं, और जहां हमारे धर्म के 3 रत्न हैं, हमारे धर्म के 5 सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, वायलेंस और नॉन वायलेंस की श्रेणी के बीच में जो अंतर है, जो अभय जी ने इस मंच से हमें अच्छी तरह से समझाया, सत्य का सिद्धांत, वो सत्य का रास्ता कांटे भरा हुआ रास्ता है, पर उस पर चलने की क्षमता मानवी को रखना ही होगा। और जहां सत्य और अहिंसा की बात की जाती है, वहीं उसके साथ अस्तेय की सोच और विचारधारा, और उसी के साथ अपरिग्रह, धन का संग्रह समाज के लिए, मानवी के लिए, स्वतः के लिए नहीं। और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अगर इन 3 नवरत्नों को हम साथ में ले और 5 सिद्धांतों को साथ में ले, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मोक्ष का रास्ता हमारे सामने तैयार हो जाता है, मेरे भाइयों और बहनों। और आज इस दिवस पर इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि जैन धर्म के प्रकाश पुंज के बिना मेरी भारतीय संस्कृति, मैं मानता हूं, अधूरी है। और उस विचारधारा में जैन धर्म की महानता केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, केवल अपनी कारीगरी के तक सीमित नहीं, जिसका एक प्रचंड उदाहरण, चाहे दिलवाड़ा की बात करें, रण कपूर की बात करें, बाहुबली मूर्ति की बात करें, और तो और क्या, लेकिन अभय जी और हमारे ग्वालियर के किले के ऊपर जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां सजाई गई हैं 2000-3000 साल पहले, हर दिन उस इतिहास को हमारे समक्ष रखती हैं। ये महान धर्म भारत की असली पूंजी है। और आज जो अभय प्रभावना संग्रहालय की शुरुआत की जा रही है, मेरे पूर्व राकेश भाई जी ने कहा कि संग्रहालय मूक दर्शक होता है, लेकिन यह अभय प्रभावना एक मूक दर्शक नहीं है, एक जीता जागता हुआ परिचय है एक एक मानवी के लिए कि सिद्धांतवादी जीवन कैसा जिया जाता है। और हृदय के गहराइयों से आज मैं अभय जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, बधाई केवल नहीं, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो आज इस दिवस पर एक नींव आपने रखी है, एक पूंजी बनाई है। क्योंकि वर्तमान युग में जो कल युग का जमाना कहा जाता है, एक एक नागरिक को और एक एक मानवी को आदर्शों के प्रति आकर्षित करने के लिए केवल मंदिर जाकर वो व्यक्ति प्रेरित नहीं होता। जब वो व्यक्ति स्वयं प्रवास करता है अभय प्रभावना में,
प्रवास करता है जैन और भारतीय संस्कृति के अनुभव में, प्रवास करता है जैन और भारतीय इतिहास के अनुभव में, प्रवास करता है जैन और भारतीय आध्यात्मिक शक्ति के प्रवास में, तब वो अनुभव व्यक्ति के जीवन में अंकित हो जाता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा ये अभय प्रभावना, आपका जो जीवन की एक व्याख्या रही है, अभय जी को मैं पिछले 30 वर्षों से मैं परिचित हूं। मेरे पूज्य पिताजी, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक पारिवारिक संबंध उनके साथ रहा है। और आपने इस मंच से आज कहा अभय जी कि मैं प्रवचन नहीं देना चाहता, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जीवन ही हम सब के लिए प्रवचन है। बहुत बिरले व्यक्ति हमें जीवन में मिलते हैं जिनकी सोच विचारधारा में दृढ़ संकल्प की झांकी देखा जाए, जिनके मूल्य और सिद्धांतों में एक अडिगता दिखे। और जितने बाहर से कोमल मेरे अभय जी हैं, उतने ही अपने मूल्य और सिद्धांत और भारतीय परंपरा और संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति उतने ही दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आपको आज बधाई देना चाहता हूं और एक और विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। आज भारत अपने अमृत काल से शताब्दी काल के प्रवास पर चल चुका है। ये 22 वर्ष भारत को विश्व पटल पर उजागर करने वाले 22 वर्ष होंगे। लेकिन भारत केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में उजागर नहीं होने वाला। भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में उजागर होना होगा। यही भारत का भविष्य है। और आज इस दिवस पर जो सोच विचारधारा है कि विकास भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, पर विरासत भी होनी चाहिए। भारत की असली पूंजी भारत की आध्यात्मिक शक्ति सदैव रही है। और आज मुझे विश्वास है कि अभय प्रभावना जैसे संस्थान की स्थापना के आधार पर भारत की प्रचंड आने वाला भविष्य, एक नया भविष्य उजागर होगा। अभय फिरोदिया जी जैसे शिल्पकारों के आधार पर वो प्रचंड भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र। His Highness Maharaj Kumar Laksharaj Singh Ji of Mewar in Rajasthan hails from the unmatched legacy of great heroes of Indian history. His ancestors include Bappa Rawal, Maharana Sangha, and Maharana Pratap, who are the staunchest defenders of Indian culture and values for over 1,500 years. The Ranas of Mewar have been, over more than a millennia, honored as the most enlightened, chivalrous, fearless protectors of Indian culture, while being the most benevolent rulers of a kingdom that has never bowed before any invader. His Highness Maharaj Kumar Laksharaj Singh Ji is a remarkable and dynamic leader who continues to maintain the rich legacy of the royal family of Udaipur with all humility. It is our honor to have His Highness Maharaj Kumar Laksharaj Singh Ji address the gathering today.
सबसे पहले मैं गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। परम श्रद्धेय गडकरी साहब, परम श्रद्धेय महाराज ग्वालियर, अन्ना हजारे साहब, मैनिका जी, मेहता साहब, हमारे आदरणीय और आज के सूत्रधार फिरोदिया साहब, उपस्थित सभी अतिथिगण और सारे महानुभाव, ये खामोशी आप समझ सकते हैं और इसका कारण भी मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हमारे बड़े, हमारे आदरणीय पहले अगर बोल जाएं तो जो छोटे हैं वो थोड़े से पसोपेश में आ जाते हैं और उनके लिए समय जो है थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तैयार ऐसा महसूस होता है कि मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ, तैयारी हिंदी की करके आया था और केमिस्ट्री का पेपर मुझे जो है वो मिल गया है। देखिए, उम्मीद मेरे को पीछे वालों से है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ये बात कहीं ना कहीं जो पीछे के छोर में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से जो है वो जुड़े हैं। और मैं सबसे पहले जो है वो, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। आज हम एक जिंदा दिल व्यक्ति के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी एक सोच को हम लोग यहाँ पे साकार होते हुए देख रहे हैं और उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं फिरोदिया साहब को तहे दिल से बहुत बहुत जो है जन्मदिवस की शुभकामनाएं जो है वो प्रेषित करता हूँ। हम लोग जब बचपन में, और आज भी, क्यों हम बचपन की बात करें, पर अगर आज की भी हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये होता है कि हमको हमारा तोहफा कब मिलेगा, कब हमारे बड़े या कब हमारे साथ वाले, कब हमारे मित्र जो हैं वो हमें तोहफा देंगे। आज यहाँ आकर हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जन्म दिवस के ऊपर तोहफा लेने की जगह के ऊपर इस पूरे विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसी सौगात यहाँ से जो है वो मिल रही है। देखिए, मैं वैसे कभी नहीं कहता हूँ कि आप लोग ताली बजाइए, पर ऐसी सोच के लिए, ऐसे कार्य के लिए ये तालियां जरूर कमजोर थी। फिरोदिया साहब चाहते तो शायद इस दुनिया के, इस विश्व के किसी कोने में जाकर आज का दिवस मना सकते थे, पर उन्होंने चुना कि नहीं, आज इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना था। आज वो दिन था जो इस परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित होकर जो है वो बांटना था। हम लोगों का कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि इस सोच के साथ में हम लोग जुड़ें। मैं 21वीं सदी, हम लोग आज सब इस 21वीं सदी की तकनीक के ऊपर खड़े हैं। आज हमें एक और सौगात क्या मिलती है, मेरे को 2 पंक्तियाँ आज जो है वो ज़रूर याद आती हैं, जिसको मैं आगे, जो हम लोगों ने आज यहाँ पर महसूस किया, देखा, समझा, सीखा, जो हमारे साथ में ले जाएंगे। कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे, वो जिंदगी थी। आज वो जिंदगी हम लोगों को मिल रही है इस संग्रहालय के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अक्सर किताबों को जो है वो चेहरे पे ढक के सोया करते थे, उनके आनंद लिया करते थे। मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता। आज हम लोग ज्ञान से जो है वो गले मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इससे ज़्यादा आज की तारीख में, इस 21वीं सदी के अंदर, इस पीढ़ी को, आने वाली भावी पीढ़ी को शिक्षित होने के लिए और अच्छी कोई तोहफा जो है वो मिल नहीं सकता था। ये आज हमारे लिए जो है वो बड़ी खुशी की बात है। और तकनीक का इस्तेमाल किस कदर से किया गया है, जहां पर हम लोगों को प्रेरित किया जाए। जब कभी भी संग्रहालयों की चर्चा होती थी, हम लोग उल्टी दिशा के अंदर भागते थे। ये एक आसान कदम नहीं था। आज तकनीक को लोगों के साथ में जोड़ने का काम, विश्व के अंदर आने वाले भावी पीढ़ी को जोड़ने का काम, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता इस सोच से होकर गुजरता है। एक मेरे को कक्षा से एक प्रसंग जो है वो ज़रूर याद आता है, जो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आज वो यहाँ पर जीवंत हो रहा है। हमारे को कक्षा के अंदर हमारे अध्यापक ने जो है एक नक्शा हम लोगों को दिया। जैसे ही वो नक्शा हम लोगों तक पहुँचा, तो हमारे जैसे जो चंद खुराफाती जो पीछे ही पीछे बैठा करते थे, उनके लिए वो आदेश ऐसा लगो कि जैसे कान में कोई इतनी अच्छी कोई गूंज हो। उन्होंने कहा, इस नक्शे को फाड़ दीजिए। तो हम लोगों ने जितने उसके टुकड़े कर सकते थे उस नक्शे के, हमने सब ने जो है उसके टुकड़े कर दिए। चंद लम्हे बाद, वो गुरु भी तो हमारे थे, तो उसके बाद में उन्होंने वापस पूछा कि सबने इस नक्शे को जो है वो फाड़ दिया। सब लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि जी गुरुदेव, हमने इस नक्शे को जो है वो फाड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब इसे जो है वो वापस जोड़ने का जो है वो प्रयास करें। अब कुछ लोग पीछे जो बैठे हुए थे हम जैसे, तो वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे।
और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जो आगे ही आगे की छोर में बड़ी गंभीर अवस्था में जो कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक बच्चे ने जो है वो हाथ खड़ा करके कहा कि गुरुदेव, मैंने जो है वो इस नक्शे को जोड़ दिया। पूरी की पूरी कक्षा जो थी वो हैरान थी कि ऐसा उस व्यक्ति ने कैसे किया। हम लोगों के लिए एक विचार विमर्श का जो है वो एक मुद्दा बन गया। तो गुरुदेव ने पूछा कि नहीं, तसल्ली से इस नक्शे को जोड़ दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैंने इस नक्शे को अच्छी तरह से जोड़ दिया है। तो उनसे पूछा उस बच्चे से गुरुदेव ने कि आपने ये काम कैसे किया। तो उन्होंने कहा बड़ा सरल काम था गुरुदेव, बहुत ही आसान था। मैंने उस नक्शे को लिया, उसे उल्टा करा, उसके पीछे एक इंसान बना हुआ था, मैं इंसान को जोड़ता चला गया, देश और दुनिया खुद ब खुद जुड़ती चली गई। आज जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वो मैं यहाँ पर देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि एक दुनिया जुड़ती हुई जो है वो मुझे नज़र आती है, एक देश जो है वो जुड़ते हुए नज़र आता है। और आज की तारीख में अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ऐसे ही एक जुझारू, एक कर्मठ सोच की आवश्यकता है जो ली गई है। जितनी इसकी सराहना की जाए उतनी कम है। साहब के नाम में शिव का एक अवतार, शिव का एक अंश जो है वो आता है। 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं, पर उसके पहले मेरे को एक बात और याद आती है जो मैं बांटना चाहता हूं। ऐसी वीर भूमि पे, मैं मेवाड़ की भूमि से आता हूं, एक वीर भूमि से मैं दूसरी वीर भूमि पे उपस्थित हूं। अगर इस बात को मैं ना कहूं तो कहीं ना कहीं मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँगा। हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, हम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की जो है वो चर्चा करते हैं, जिन लोगों ने आज की तारीख के अंदर एक अपना एक नाम और एक सोच को जो है वो कायम किया। देखिए, इन लोगों ने शस्त्र उठाए थे अहिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, गैर जो चीज़ें हमारे साथ में उस ज़माने में हो रही थी उसके खिलाफ। तो आज आप देखिए हमको यहाँ पर आने के बाद में क्या सोच मिलती है, क्या सीख हम लोगों को मिलती है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिन्होंने शस्त्र उठाए उन्हें वीर कहा गया, पर जिन लोगों ने शस्त्रों को त्यागा है उन्हें महावीर कहा गया। मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को जो है मैं विराम देता हूं, और ये 2 पंक्तियां मैं आज आपके जन्म उत्सव पे मेवाड़ से लाया हूं और आपको मैं समर्पित करता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार। If India today can boast of a road system better than that of the United States and infrastructure growth that is faster and probably the best in the world, it is due to the vision, commitment, strategic thinking, and tireless effort of our Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitinji Gadkari. In fact, his contribution cannot be measured only in kilometers. A broad-minded practitioner of the values of Hinduism, Shri Nitinji Gadkari has proven that politics is an instrument not only of socio-economic change, but also of enhancing confidence in our civilizational identity. I request Honorable Minister Shri Nitinji Gadkari to kindly deliver the inaugural address. Over to you, sir. Thanks. मंच पर उपस्थित हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे सभी सम्माननीय मार्गदर्शकगण, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अभय जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भविष्य के पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रकल्प का निर्माण किया है। ये केवल म्यूजियम नहीं है या केवल नॉलेज सेंटर नहीं है, तो एक प्रकार से यहाँ जो लोग आएंगे उनको भविष्य में अपनी जीवन पद्धति किस प्रकार से रखनी चाहिए इसकी प्रेरणा मिलेगी। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम
सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, जिसका मराठी में एक कवि ने अच्छा अनुवाद किया है कि पडे खाल तीजे नभातून पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। हमारे सभी धर्म में विशेष रूप से जो भावार्थ है वो अंततोगत्वा एक ही जगह पहुंचता है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी प्रेरणा है, और हमारी समाज की जो रचना है वो 3 महत्वपूर्ण पिलर पर खड़ी है। एक है इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इथिक्स का संबंध जो होता है वो हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। नॉलेज ये पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। पर नॉलेज का वेल्थ में रूपांतर करने से परिपूर्णता नहीं आ सकती। सत्ता, संपत्ति कितनी भी मिलने के बाद पूर्ण समाधान मिलने की कोई गारंटी नहीं है, और इसलिए नॉलेज विथ संस्कार एंड नॉलेज विथ वैल्यूज, इसके सिवा परिपूर्णता नहीं है। जो हमारे जीवन मूल्य है, पुरातन काल में जैन धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, जो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, उन जीवन मूल्यों का हमारे समाज के निर्मिति में बहुत बड़ा स्थान है। कुछ बातें कहना बहुत आसान होती है, पर आज पूरे विश्व में जो समस्या है वो एक प्रकार से विस्तारवादी और अधिनायकवादी लोगों के बीच में कैसे टकराव हो रहे, हम पूरे विश्व को तरफ देख रहे हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि कोई विश्व युद्ध होगा। इन सब समस्याओं का कारण क्या है? समस्या का कारण यही है कि प्रगति, विकास, समृद्धता और संपन्नता ये जीवन में कोई आखिरी परफेक्शन तक नहीं पहुंचा सकती। इसके साथ, नॉलेज के साथ, संपत्ति के साथ, सत्ता के साथ सहिष्णुता होगी, सत्य अहिंसा होगी, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति होगी, परिवार पद्धति होगी और जीवन पद्धति होगी, तो समाज सुचारू रूप से चल सकता है। जब इस प्रकल्प की चर्चा हो रही थी तो आदरणीय अभय जी ने बहुत बार मुझे इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं की, और जब वो ये कंसेप्ट बता रहे थे तब उनके मन में कुछ आइडियोलॉजिकली एक उद्दिष्ट था। और मुझे याद है कि एक फिलोसोफर ने सही कहा था कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें फिलॉसफी श्रेष्ठ है। जीवन जीने के लिए जो जीवन का तत्वज्ञान होता है वो वैल्यू बेस है, और वैल्यू बेस्ड जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति और वैल्यू बेस्ड जो हमारे जीवन में जो वैल्यूज़ है उसके प्रति अगर हमारी समर्पित भाव से कटिबद्धता होगी तो समाज सुचारू रूप से चल सकता है। भौतिकवाद और भोगविलास जो होता है उसमें प्रगति और विकास में हम अनेक जगह अनेक प्रगति विकास कर सकते हैं, पर उसके पूरी तरह उद्दिष्ट हासिल करने के बाद भी समाधान हमारे हाथ में नहीं मिलता। और इसलिए जो भगवान महावीर जी ने और जैन धर्म में विशेष रूप से जो जीवन मूल्य थे, उन मूल्यों का अभय जी ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और ये जो मूल्य है, इसका संस्कार अगर ये आधुनिक भविष्य की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके पास पहुंचाना होगा तो हमें माध्यम भी टेक्नोलॉजी का लेना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन।
जो टेक्निक्स है वो मॉडर्न होंगे तो ही नई पीढ़ी समझ सकती है। और उस भाषा का उपयोग करके जो पुरातन इसमें जो इतिहास, संस्कृति और विरासत, भगवान महावीर, भगवान बौद्ध, गौतम बुद्ध, भगवत गीता, अनेक जगह पर, कुरान और बाइबल में भी वही बातें अंततः यही लिखी है। कहीं ऐसी बातें नहीं है जो आज दुनिया में देखने के लिए मिलती है। पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। This is the appropriate time that we need to understand what is the spirit behind the philosophy. और ये जो स्पिरिट है ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे भविष्य के पीढ़ी तक प्रभावी रूप से जाएंगा, ताकि उनके सोचने में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कर्तृत्व में, उनके नेतृत्व में इस मूल्यों के कारण जो परिवर्तन होगा वो समाजानुकूल और युगानुकूल होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका चिंतन करके ये नॉलेज सेंटर, मैं इसको जानबूझकर नॉलेज सेंटर कह रहा हूँ, क्योंकि म्यूजियम जो होते हैं वो बहुत बार आर्ट, कल्चर, कोई चित्रकार होता है, कोई मूर्तिकार होते हैं, ये सब यहाँ है। पर ये चीज़ों के पीछे जो छुपा हुआ भावार्थ है, जो स्पिरिट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो स्पिरिट होता है वो फिलॉसफी के रूप में हर समय समाज में प्रेरणा देता है और समाज परिवर्तनशील है। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन केवल मर्यादित रूप से उसको सोचकर हम परिपूर्णता के तरफ नहीं जा सकते। बीच में वर्ल्ड में चर्चा हो रही है, भूटान के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन में सब कुछ अच्छा होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सब अच्छा होगा, घर, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाएगा और परिपूर्णता आई, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं लैकिंग है, और लैकिंग है जो जीवन को बदलने वाले जीवन मूल्य है, उसका अनुकरण अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर उसका परिचय होता है तो आदर्श समाज की रचना खड़ी होती है। और आदर्श समाज जो होता है वो संस्कारों के बिना नहीं होता। वो जीवन मूल्यों के प्रति आस्था जगाने का कार्य आज यहाँ हमारे आदरणीय स्पिरिचुअल संत लीडर्स बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन से उसकी प्रेरणा मिलती है। और इन सब बातों को इकट्ठा करके उसको टेक्नोलॉजी में डालकर ये हर व्यक्ति के मन तक कैसे पहुँचे, मन, आत्मा और शरीर, ये तीनों भाग है। पर जब तक मन में कोई बात नहीं पहुँचेगी तब तक परिवर्तन नहीं होता। मुझे आज फिरोदिया जी के तरफ आकर इस लोकमान्य तिलक जी के उस वाक्य, उस भाषण की याद आई कि उन्होंने कहा था कि एखादा व्यक्ति कितने साल जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो कैसे जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण है। इस देश में पैसा कमाने वालों की कमी नहीं है। सत्ता, साधन, संपत्ति अनेक बार आती है, पर मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्ता, संपत्ति, ज्ञान और सौंदर्य ये नश्वर है। ये कब जा सकते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ तो राजनीति में तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मजाक में कहता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। पर जीवन में जो सच्चाई के लिए, जीवन मूल्यों के साथ समाज परिवर्तन के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जो लोग सोचते हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अभय जी ने अपने जीवन में बहुत प्रगति की, आर्थिक क्षेत्र में अनेक उपक्रमों को यशस्वी रूप से चलाया। उनका अपने आप एक महत्व है, पर आने वाली पीढ़ियां अनेक सालों तक ये प्रोजेक्ट, प्रकल्प याद रखेगा। और मैं जिनके पास कुछ सीखा था वो एक बात कहते थे, एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट 5 years, ही थिंक्स फॉर 5 years, एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो आपको अभी आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, आपका ब्रांड
और बढ़ता रहेगा, जाता रहेगा, कंपटीशन होती रहेगी, वो चलने वाला है। पर ये 100 साल नहीं, अनेक सालों तक भविष्य के पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। दैट इज टू बी द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड फॉर द सोसाइटी। मैं अक्सर अपने ऑफिस में मैंने एक वाक्य लिख कर रखा है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मैं तो कोई साधु सन्यासी थोड़ी है, हम लोग परिवार है, संसार है, थोड़ा बहुत स्वार्थ होता ही है, पर मैं सामाजिक दायित्व, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिवनेस, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनिशिएटिव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अक्सर अपने बारे में सोचते हैं। एक ने बहुत अच्छा कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दैट इज टू बी इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है कि भविष्य के पीढ़ी के लिए सोच समझकर एक विजन के साथ, एक फ्यूचरिस्टिक विजन वो सामने रखकर हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत से जो जीवन मूल्य हमको मिले हैं भगवान महावीर जी से, भगवान गौतम बुद्ध से, उन सब मूल्यों को इकट्ठा करके उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस म्यूज़ियम में, नॉलेज सेंटर में है, और सालों सालों तक भविष्य के पीढ़ी को ये प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अभय जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये देश और विश्व इस प्रकल्प को सालों सालों तक याद रखेगा, यह विश्वास व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से आज के इस हमारे कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स उपस्थित है। मैं सबके नाम नहीं ले सका क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर से उड़ना है और 6 बजे के बाद पहुंच नहीं पाएंगे, और रात को फिर बाकी मेरा भी काम है, दौरे हैं, तो इसलिए जाना है। तो मैं फिर से एक बार इन सभी हमारे साधु, एक प्रकार से हमारे मार्गदर्शक है, वो हमको आशीर्वाद दे कि हम भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। यही उनका आशीर्वाद हमको भी जीवन में बहुत बहुत उपयोगी होगा, और अभय जी जैसा कुछ थोड़ा बहुत छोटा बहुत काम हम भी कर पाएंगे। इसी इच्छा के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, नमस्कार। We now come to the happiest moment, inauguration of the museum and special features. You will see on the wall the unveiling and inauguration of Abhay Prabhavana, the museum, building and estate. May I request Honorable Minister Shri Nitin Ji Gadkari to please inaugurate Abhay Prabhavana. The Manastam symbolizes the great cultural values of our society as practiced by the common man and indicating how elevation of the soul can be achieved while aspiring for eternal liberation. Manastam commemorates values both of the common man and the enlightened one. I request Justice Dalveer Bhandari ji to unveil the Manastam. Bhandari ji.
Ashtapad is a presentation of the great contribution to civilization by the first Tirthankar, Rishabhdev, whose image is picturized in the context of today's world. If Jains are who they are, that is not the achievement of ahimsa alone, but for building the culture of defending oneself, society, and values. Also, developing communication abilities, great emphasis on productivity, constructive attitude to trade, proficiency in skills, and the knowledge of mathematics and science established by Rishabhdev. Every Jain follows these aspects of Jain tradition in a committed manner. I request Honorable Shri Jyotiraditya Scindia to inaugurate the Ashtapad. The Samveg Plaza is the most modern representation of the characteristics of a temple. Our founder, Sri Navalmalji Firodia, had said that a temple or a place of worship is defined by the values of peace, wisdom, cleanliness, empathy, and service. Samveg means being at complete peace, even while being creative and active. This modern representation offers just that. I request His Highness Maharaj Kumar Laksharaj Singh Ji to inaugurate the Samveg Plaza. Jain philosophy is recognized since time immemorial as the path of knowledge, Jnana Marg, and not of blind faith. The path of timeless wisdom presents to the visitor in modern, immersive, interactive, and high-tech form the principles and considerations on which our philosophy is founded. I request Sri D.R. Mehta Ji to inaugurate the Path of Timeless Wisdom Gallery. Indian civilization has evolved over millennia from the Saraswati Sindhu settlements until the present times. The Shraman tradition arguably is the oldest. The evolution of Indian culture, history, and value system is distinguished by the collaboration, cooperation, and goodwill of different traditions such as the Vedic, Jain, Buddhist, and in the last millennia, the Sikh tradition. The rise of the magnificent cultural edifice showing the shaping of our values, our social practices, our heritage, temples, our art and literature is showcased and explained in part 1. I request Srimati Menka Gandhiji to inaugurate the path of Jain culture and history. The Indian value system is the combined commitment to all traditions which have at their core inclusivity, compassion, humanism, and creativity. The centrality of values common to all Indic traditions
is shown in the gallery on eternal stream of Indic values. I call upon Shri Anna Hazare ji to inaugurate this gallery. The Jain tradition promotes values of life which would make the person following those confident, creative, contributing to society, and compassionate, leading to personal happiness and social well-being. The path to happiness attempts to describe what personal attitude, food habits, approach to family and society, disciplined and active life one should lead to reach personal contentment, opening the possibility to reach higher levels of spirituality. May I request Sri Abhay Prabhavana to inaugurate the Path to Happiness Gallery. Thank you. Srimati Menaka Gandhi. She has been an intrepid activist for animal welfare and instilling in all of us the respect that each and every living being deserves. It wouldn't be wrong to say that she is a Jain at heart. May I request Mrs. Gandhi to please say a few words. Respected Sri Firodia ji and his family, some of my favorite people who are sitting on the dais, including Nitin Gadkari ji, Sri D.R. Mehta ji, respected spiritual leaders. I have just come from Ladakh, where the Rinpoche has given us land to make an animal shelter, and I thank you for that. I'm delighted and honored to be here at this unique center of learning and contemplation for the person who seeks to make his time on earth meaningful. I have lived life like a Jain, to own little, to want little, and to try and treat everyone or to do unto others as I would have them do unto me. I run an organization now for many years, for 40 years now, called People for Animals. We have 30 shelters. We save over 5,000 to 6,000 animals a day. And we do it knowing that there is no difference between me and the being that I save. In another life, they will save me. We plant trees, we clean water, we promote vegan and organic food, we promote work to make government more humane. This is what Jainism is about, and this is what this center will teach. The Jain religion respects all of life, the blade of grass, the ant, the aardvark, the elephant, and exhorts you, as it has to me. The voice that comes from the Jain religion to me is to live mindfully. Do not cause suffering. Avoid anything that causes suffering, including wanting things that destroy the earth, including any kind of suffering to anybody. And this is what I have tried to do every day, not just with animals, but with people. I thank you again for inviting me to this glorious place, which I'm sure will teach many, many more people to live the same way. Jai Hind.
Request our guests to please be seated. Our dignitaries have to leave. An illustrious legal luminary of international repute, Justice Dalveer Bhandari belongs to a family of distinguished lawyers whose contribution to law and justice in India remains unparalleled. Former Chief Justice of the Bombay High Court and Judge of the Supreme Court of India, Justice Bhandari occupies a seat at the International Court of Justice at The Hague. Justice Bhandari today is known as a man of mettle and integrity, a pioneer in the implementation of innovative practices in the legal system of India, and a staunch crusader of gender justice, equality rights, and intellectual property rights. We are grateful that Justice Bhandari has consented to preside over today's important function. May I request you, sir, to please share your wisdom with us. वंदनीय आचार्य चंदा जी महाराज, नितिन गडकरी जी इन एब्सेंस, ज्योतिराज सिंधिया इन एब्सेंस, लक्ष्यराज सिंह जी इन एब्सेंस, डॉक्टर D.R. मेहता जी, अन्ना हजारे जी, आदरणीय अभय फिरोदिया जी एवं ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यगण और सज्जनों, अभय फिरोदिया जी ने अपने पारिवारिक समाज कल्याण, परोपकार और समाज सेवा की सुंदर परंपरा को न केवल जीवित रखा परंतु कई गुना आगे बढ़ाया तथा प्रभावना के नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसका ज्वलंत उदाहरण है नवनिर्मित अभय प्रभावना म्यूजियम, और जिसे मैं संग्रहालय या केंद्र कहना उपयुक्त समझता हूँ। इस अद्भुत संग्रहालय एवं ज्ञान केंद्र के पीछे अभय फिरोदिया जी और उनकी सहयोगियों की 10 वर्षों की तपस्या, अथक परिश्रम, उदारता और सच्ची निष्ठा निहित है। इस संग्रहालय एवं ज्ञान केंद्र के निर्माण में 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आया और पूरा खर्च फिरोदिया जी और उनके परिवार ने किया। इन संस्थाओं ने भारतीय मूल्य के साथ जैन दर्शन के सिद्धांतों और मूल्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जैन धर्म के सदियों पुराने सिद्धांतों और मूल्यों की वर्तमान युग में क्या सार्थकता है। इस प्रश्न का भी सुंदर उत्तर संग्रहालय और ज्ञान केंद्र में मिलता है। आधुनिक विज्ञान की सहायता द्वारा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, जिनमें आत्मा, कर्म, अपरिग्रह और संयम जैसे विषयों की जानकारी कुछ ही क्षणों में देने की व्यवस्था इन संस्थानों में उपलब्ध है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों और एवं स्नातकों को जैन धर्म के मूल्य सिद्धांतों के बारे में ज्ञान अर्जित करने की विशेष व्यवस्था है। श्रमण और जैन धर्म की उत्पत्ति तथा 3000 वर्ष की शानदार इतिहास की समुचित जानकारी इस ज्ञान केंद्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को स्थापित करने में हमारे आचार्यों और भक्ति काल के कवियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस म्यूजियम में 167 सुंदर पेंटिंग भी सम्मिलित हैं और इनके बारे में जो जानकारी है वो भी अर्जित कर सकते हैं। उस लंबी सूची में आदि शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, कबीर आदि सम्मिलित हैं। इस विषय की मैं विस्तृत जानकारी और गहराई के लिए 150 डिजिटल कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं। अभय फिरोदिया जी ने अपने जीवन काल में कई समाज कल्याणकारी कार्य किए हैं, परंतु मेरी दृष्टि में ये संग्रहालय और ज्ञान केंद्र बनाकर उन्होंने उनको विशेष रूप से आत्मसंतोष, आनंद और सुकून मिला होगा। जिस स्तर पर आज विश्व में अराजकता एवं हिंसा फैली है, उसको समाप्त करने का सामर्थ्य जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में अहिंसा, अपरिग्रह और संयम के सिद्धांत में निहित है। आज अभय फिरोदिया जी का 80वां जन्म दिवस है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके लंबे जीवन और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इस संग्रहालय और ज्ञान केंद्र को बनाकर फिरोदिया जी ने न केवल समाज परंतु पूरी संपूर्ण मानवता को एक अनमोल और सुंदर उपहार दिया है। उनके जन्मदिन के ऊपर इससे अच्छी उपहार समाज या मानवता को नहीं मिल सकता था। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। In his selfless service to humanity, Padma Bhushan Shri D.R. Mehta can be referred to as the world's greatest philanthropist, dedicating himself towards ensuring quality of life to millions of individuals with damaged or destroyed limbs. Founder of the Bhagwan Mahavir Viklang Sahayat Samiti in Jaipur, Shri D.R. Mehta's innovative Jaipur foot and Jaipur knee limb fitments have been recognized as the most extraordinary invention of the century. The renowned scholar of enterprise, C.K. Prahlad, had pointed out about 20 years ago that if the market cap of NGOs were to be assessed, Jaipur foot would then be around $1 billion US. The very name Bhagwan Mahavir Viklang Sahayata Samiti indicates Shri Mehta's commitment to Jain values. It is indeed our pleasure to have with us Padma Bhushan D.R. Mehta, who embodies the Jain value of selfless service. We would like to hear from you, sir.
My vandana to respected Acharya Chandanaji Maharaj Sahib. My vandana to Rinpoche, respected Rinpoche, respected Bhandari Sahib, respected Annarajari Sahib, respected Firodia Sahib, Mrs. Firodia Sahib, entire Firodia family, and friends. It's a great day today. It's a great event today. What has been created here is fabulous. Perhaps this word does not convey the full meaning of what this institution means. It used the Hindi word. आपने गजब का काम किया, गजब का काम किया. This institution is not merely magnificent. It's also meaningful and modern, unlike other museums. It is meant to promote and inculcate the humanistic and ethical values of Jainism, apart from giving a sense of the history and culture. It highlights ahimsa, aparigraha, anekant, and other principles of Jainism, and also the Indian traditions, Indic traditions, as you said, or particularly Shramnik tradition. Jainism is the religion of 21st century, or philosophy of 21st century. It addresses all these 6 mega problems of the world. Rampant violence, it has the principles of ahimsa. Mahavir was the greatest apostle of ahimsa in the world ever. 25 centuries later, Mahatma Gandhi became the greatest ahimsak. And Rakesh Bhai Sahib have gone. He belonged to the tradition of Srimad Rajchandra. And Rajchandra was the greatest influence of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi's principles went to Martin Luther King or Mandela. Then you have intolerance, excessive intolerance. Your Anekant addresses that problem. We have ravenous consumerism. Aparigraha deals with that. The concept of human rights. And the concept of dignity of woman, violation of the women's rights, gender equality. Both are legal constructs today. But Jainism provides a fundamental, basic base for that. Mahavir says all souls are equal. There can't be any distinction between man and man, man and woman. He liberated Chandanwala, abolished slavery in a way. And one point, or one aspect of Jainism, which is often not well recognized, getting highlighted, is its contribution to environmental protection. Mahavir's first discourse is Acharang. The first sutra is rhetorical. Atma kahan se aaya, kahan jayega.
And after that, there are 6 chapters. With translation, they run into 20 pages. They talk of life in air, life in water, life in earth, life in fire, life in vegetation. I'll give you an example. He talks of vegetation and he compares it with human being. Man is born, so does the tree. Man needs nutrition, so does the tree. Man grows. And then he says, all of a sudden, man is a conscious, sentient being. And he says, a tree is also a conscious, sentient being. And like this, he talks of metabolism, catabolism. Now, and he enjoins that please don't destroy vegetation. If you follow the Jain principles, perhaps there would be no problem of environmental degradation. As you go around this institution, the kind of projection it has made of various principles is bound to be rubbed on you also. It's a great work which has been done. How do I praise Abhay Prabhavana Sahib for this work? No adequate words. And as people said, on your birthday, the kind of gift you have given to the world is unparalleled and beyond compare. Congratulations for your birthday and congratulations for this great work. Thank you very much. We take immense pleasure in acknowledging the efforts and participation of each individual in the making of Abhay Prabhavana. Trustee of Amar Prerna Trust, Sri Bala Chordia, has been deeply involved in this project for a decade, engaged right from the ideation stage, mentoring specially the art section, exhibits in the Experience Center, and leading the communication team. Shri Prasan Firodia, Trustee of Amar Prerna Trust and MD of Force Motors and Group Companies, always pitched in to provide his unflinching support on technical matters in spite of the heavy business responsibilities that he shoulders. Harsha Jain and Sejal Firodia's support and encouragement has always been there. Abhay Prabhavana, the Museum and Experience Center, has now been inaugurated. All of this has been possible with the outstanding managerial prowess of our trustee, Sunanda Mehta, who has been a mentor and has monitored the construction activity with impeccable precision, despite her engagement in her professional business activity. May I request Sunanda ji to please deliver the formal vote of thanks. Respected spiritual leaders, luminaries, distinguished guests, family and friends, today is a special day for all of us, and I feel deeply honored as we inaugurate Abhay Prabhavana. As a trustee of this institution, I extend my heartfelt gratitude to each one of you being here and making this inauguration such a truly memorable occasion. This institution is a labor of love, dedication, and shared experiences. But none of this would have been possible without the invaluable support, guidance, and contribution of so many who stand with us today in spirit and in person. Your guidance, expertise, and relentless efforts
have transformed Abhay Prabhavana from a dream into a tangible, inspiring space. From the depth of my heart, thank you. On a personal note, I've had the privilege of witnessing my father, Dr. Abhay Prabhavana, as he guided us all with his wisdom and passion for values that transcend time. He has instilled in us the principles of Jainism in ways that are relevant and timeless. Over the past decade, he has poured his heart into creating Abhay Prabhavana, a labor of love that reflects his deep commitment to instilling values that inspire a better, more compassionate world. Today, we take the first step in a journey that we hope will touch many lives. Abhay Prabhavana is a space where we hope future generations will come to better understand the tenets of Jainism, embrace values of compassion and selflessness, and strive to be better human beings every day. On behalf of our entire family, all of those who have supported, encouraged, and contributed to this journey, I thank you once again. We hope that as you explore the museum and knowledge center, you feel a part of this shared dream, a dream that has now become a beautiful reality. Thank you. May I request you all to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much, but please do not leave without joining us at tea. We invite you to the tea tent for refreshments, which is to my right, your left. After tea, guests are invited for a specially curated program to visit different parts of the museum. Each path will take up to an hour. Journey 1 is the path of timeless wisdom. Journey 2 is path of Jain culture and history. Journey 3 is the open-air heritage walk. May I also request you to kindly note that when you enter the museum building, your mobile phones will have to be deposited at the hand baggage hold area at the main porch of the museum. No mobile phones are permitted in the museum. On your way out, in exchange of the token that you will receive, please collect your mobile phones from the hold area. Please enjoy this brief experience and join us for dinner at Sattva, the food court, from 7:30 onwards. Thank you very, very much for being with us on this occasion today. Thank you. Please enjoy the experience.